As a woman, you can be anything. As a man, you can be anything. Or as a human identifying with any other gender, you can be anything. There is nobody to stop you. Though your gender identity is not a ground to restrict you in any sense, and I think it will never become like that, the law definitely recognizes certain special needs of every gender in order to protect you. In this video, we are going to talk about 10 such laws that every woman, that every girl living in this beautiful country, living in India, must know. Before beginning with this video, I must tell you that the Indian Constitution guarantees every woman and in fact every person, some rights are only available for citizens though, that you are equal before law. So there will be no law ever in this country that will discriminate you on the basis of your gender, definitely. Also, the Constitution gives you a right against non-discrimination along with a right to participate equally in the society. Zero FIR. So an FIR is an information, the first-hand information that you give to a police officer whenever an offense happens with you or whenever an incident occurs. In case sometimes it might happen that an offense happens at a place and then you're out of that place, maybe you're near your home, now you're near your office, but you still want to lodge a complaint. In those cases, this term zero FIR can prove to be fruitful for you. So what you can do is you can still go to the police station, any other police station, and then get your information registered there in the form of an FIR. तो ये FIR वहाँ रजिस्टर हो सकती है जहाँ ऑफेंस नहीं भी कमिट हुआ है. यूजुअली हमें FIR वही रजिस्टर करवानी होती है जिस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, जिस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ऑफेंस कमिट हुआ है. बट एज अ वुमन or as any other person also, you have this right that you can get a zero FIR registered. ये इसलिए किया गया है ताकि अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करवाने जा रहे हैं और आपके पास कोई, शायद आपके माइंड में कोई फियर है या कोई एंटिसिपेशन है कि अगर आप उस प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे दोबारा से जाएंगे तो आपके साथ कुछ और गलत ना हो जाए, या फिर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ही अपनी इन्फॉर्मेशन दर्ज कराना चाहते हैं तो आप करा सकें. Women have started working, they have started going to the offices, and we are not living in an era where women are constrained to their homes. Thus, a need was felt to actually bring in a law to prevent the sexual harassment of women happening at workplace. So, in case you are working in an establishment or an organization having more than 10 employees, तो आपके ऑफिस में एक कमिटी ज़रूर होगी जिसका नाम होगा इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, जो कि लॉ ने मैंडेट किया है. इस कमेटी में जाके अगर आपके साथ कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है या आपके साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे आपको लगता है कि आगे कोई ऑफेंस हो सकता है, तो आप वहाँ जाके उस कमेटी को इंटीमेट कर सकते हैं. या फिर लोकल लेवल पे भी लोकल कमिटीज़ बनाई गई हैं इस एक्ट के अंदर, जिसका प्राइमरी मोटिव यही है कि वर्क प्लेस पे विमेन को प्रोटेक्ट किया जाए और उनकी पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड वर्क पार्टिसिपेशन बढ़ाई जाए. So now you are even protected and you should feel safe at your workplace. Women in India are often under a misconception that if they are pregnant or if they have conceived, then they cannot get the fetus aborted, which is very wrong. Abortion is a legal right available to you if you are up to or less than 12 weeks pregnant. Then in case you have the kind of need to get the fetus aborted, that can be done. If you are more than 12 weeks pregnant, then the opinion of two doctors is required, and thereafter if you are very near to your delivery, then in those situations it becomes a bit difficult. But you definitely have a legal right to get abortion and not actually go through a pregnancy which is unplanned or which may have very bad consequences for both you and for the child as well. Maternity leaves. So we have often heard that childbirth is the most beautiful feeling. That is, you are actually helping a baby to grow. You are helping a small person to grow into a bigger person and become a good human being in life. So the period which you should spend with your child initially and even thereafter becomes all the more important for you. So in India, you must be happy because you have a right to get maternity leave for 26 weeks. A woman has a right to get maternity leave for 26 weeks. This right is available under the Maternity Benefit Act to you if you have
up to two or less than two surviving children. And there is also another good news: in case you are adopting a child, then also you become equally a mother, when compared to having a natural child, when compared to having a natural birth. Therefore, you are, even if you are adopting, you are entitled to 12 weeks of maternity leave from your work. If the organization that you work in, or if the establishment that you work with, have 50 or more women employees, then it is mandatory for them to have a creche established in the office premises, so that women can bring their children with them to the work if required, and also visit them 4 times a day. So your life would become even more easier if you have your children and your work at the same place to manage together. You also have a law that protects you from domestic violence and abuse. And the term domestic violence is not only applicable when you are married or when you are in a marital relationship, but it is equally applicable when you are living with somebody, that is, when you are in a live-in relationship. डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब सिर्फ यही नहीं, जब कोई आप पे हाथ उठाए या कोई जब आप पे फिजिकल अब्यूज़ करे या फिर आपको बीट या थ्रैश करे. डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्लूड होता है सेक्सुअल वायलेंस, इवन इकोनॉमिक वायलेंस, अगर कोई आपको इकोनॉमिकली मेंटेन नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, verbal abuse, and emotional abuse. All of this is included. Even if you are getting verbal threats, or you have to listen to such words which should not be said to any human being, to any woman, then also it comes under the purview of domestic violence. Also, after registering a case of domestic violence, many women feel that they do not have a right to live in their matrimonial home, which is a wrong perception. अगर आपने domestic violence का case या complaint फाइल किया भी है, तो आपके पास राइट है कि आप अपने मैट्रिमोनियल होम में रिसाइड कर सकें, यानी कि आप अपने हस्बैंड के घर में रिसाइड कर सकें. अगर वो आपके इन लॉज का भी घर है तब भी, अगर आप वहाँ पर पहले से रह रहे हैं तो. ये तब अप्लाई नहीं करता है जब आप एक्चुअली अपने इन लॉज से पहले ही सेपरेट हो चुके थे, ताकि ये सब इसलिए भी किया जाता है ताकि लॉज के मिसयूज़ को अवॉइड किया जा सके और प्रिवेंट किया जा सके. बट ये जो राइट आपको दिया गया है अपने मैट्रिमोनियल होम में या डोमेस्टिक हाउस में रहते रहने का, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई भी राइट बन जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में या अपने इन लॉज की भी प्रॉपर्टी में, बिकॉज दैट इज़ अ सेपरेट क्वेश्चन दैट विल बी डिसाइडेड लेटर ऑन. So I hope this information will protect you from all the kind of domestic violence that you are facing and that or which you might face in the future. I just pray that nobody ever goes through that trauma. At the time when an arrest has to be made, a woman can only be arrested taking the help of a woman police officer, and no officer has the right to touch your body or to force you to submit to the custody unless you are trying to evade the arrest or you're not cooperating with the authorities. And all these words must be reasonably interpreted. अरेस्ट के टाइम पे ये भी आपको एक लॉ है आपके लिए कि आपको आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, दैट इज़ रात के अंधेरे में आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है. लेकिन फॉर हार्डन्ड क्रिमिनल्स, फॉर पीपल हु नीड such arrest procedures to be followed, a woman police officer can of course reach the judicial magistrate and get a warrant for the arrest of a woman at those times. बट यूजुअल कोर्स में आपको आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ना ही आपको कोई टच करके या फिर आपको कोई फिजिकली हार्म करके कभी अरेस्ट कर सकता है. In case you are a victim of stalking, you are a victim of sexual harassment, you are a victim of voyeurism, or you are a victim of a crime where a person tried to outrage your modesty, then you have a right to get the offender punished and to take the offender to the court of law. स्टॉकिंग मतलब अगर कोई आपका पीछा करता है, जो कि ऑनलाइन भी हो सकता है. स्टॉकिंग साइबर बुलिंग की फॉर्म भी ले सकता है. वॉयरिज्म मतलब अगर कोई आपको आपके किसी प्राइवेट एक्ट करते हुए कैप्चर करता है यूजिंग कैमरा या फोटोग्राफ बनाने की कोशिश करता है, तो भी उसके लिए पनिशमेंट है. सेक्सुअल हरासमेंट, अगर आपको कोई भी सेक्सुअल रिमार्क्स देता है जो कि आप नहीं लेना चाहते, जो कि आप नहीं सुनना चाहते थे, आप नहीं एक्सपेक्ट करते थे, या फिर आपके साथ और भी किसी तरह की सेक्सुअल हरासमेंट करता है, या फिर ऐसी कोई एक्ट करता है जो कि आपकी मॉडेस्टी को आउटरीच करती है. फॉर एग्जाम्पल, टचिंग यू एट इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस एंड एट इनअप्रोप्रिएट टाइम्स विदाउट योर कंसेंट,
then you have a clear right under the Indian Penal Code, sections 354, 354A, 354B, C and D, to get the offender punished. Of course, after a trial. But you can always get your FIR registered. The Indian law protects your anonymity, protects your identity from being revealed if you are a victim of sexual harassment, rape or like offences. इन केस अगर आपका नाम अगर आप इन ऑफेंसेस के विक्टिम है और आपका नाम कोई न्यूज़पेपर या कोई मीडिया एजेंसी भी पब्लिश करती है विदाउट योर कंसेंट, then they will also be punished. So you definitely have a right to proceed against them. And nobody can disclose your identity without your consent. So this is the right to anonymity that the Indian law gives you. In case you are in a trouble for which you need legal help, I suggest you to not be hesitant and to actually approach any advocate. You can also approach me if you need help, and the reason is because you have a right to get free legal aid if you are a woman under section 12 of the Legal Services Authorities Act. But I would encourage you to pay for the services you obtain if you are capable enough to pay for it. और इन सर्विसेज को हम उन लोगों के लिए छोड़ें जिनको एक्चुअली इन सब की ज़रूरत है. बट अगर आप सच में एक ऐसी परेशानी में है जहां आपको एक एडवोकेट चाहिए, जैसे आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करना होगा, आपके बिहाफ पे आर्ग्यूमेंट्स करने होंगे, फाइलिंग एंड ड्राफ्टिंग करनी होगी, या आपको लीगल एडवाइस भी देनी होगी, तो आपके पास लीगल राइट है कि आपको वो एडवाइस, वो एड फ्री में मिले. इसके लिए अगर आप दिल्ली में हैं तो DLSA जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा है, और एक पूरा लेजिस्लेशन भी आपके लिए बना हुआ है. आप कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा ये फ्री लीगल एड का राइट फ्लो करता है, which also happens to be a directive principle of state policy, that is a DPSP. So in case you are ever in a legal trouble and you don't have the kind of finances that you need to handle it, then you must not worry, because you have a right to get free legal aid if you are living in this beautiful nation. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. विमेंस डे अभी गया है और उसी के लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो क्रिएट करने की कोशिश की है. अगर आपको ऐसी वीडियोस और पसंद आती हैं तो आप मुझे ऐसे लीगल टॉपिक्स बताइए जिन पे आप और जानना चाहते हो, जिसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने नोन लोगों के साथ शेयर भी कर पाओगे, और जिससे कि हम भी इस चैनल को एक 2-वे चैनल बना पाएंगे जहाँ पे कम्युनिकेशन हो पाएगी. अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस करना और कमेंट करके पक्का जाना. देखो, मुझे कमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उससे एक्चुअली पता लगता है कि आपको कैसा लगा है. तो कमेंट करके ज़रूर जाना कि आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, या इसके बाद आप और क्या देखना चाहते हो. Thank you so much for watching this video. I really love you all and I appreciate your presence here.